Hi, this is Mohammed Waseem, your grammar instructor and coach. You all are welcome in my channel Learn and Speak English. और जैसे कि हमने पहले एक WH वर्ड के साथ यानी व्हाट के साथ मैंने आपको बताया था कि व्हाट हम कब इस्तेमाल करते हैं, व्हाट इस्तेमाल करते हैं टू नो अबाउट द थिंग। जब हम किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, व्हाट इस्तेमाल करते हैं। और व्हाट के साथ यानी आपके इंट्रांजिटिव वर्ब्स नहीं आते हैं, यानी ट्रांजिटिव आते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। गेटिंग इट? सो जस्ट कीप अ थिंग इन योर माइंड। और व्हाट माने होता है क्या, ठीक है। आप क्या खाते हैं, व्हाट डू यू ईट। आप क्या पीते हैं, व्हाट डू यू ड्रिंक। आप क्या खेलते हैं, व्हाट डू यू प्ले। आप क्या गाते हैं, व्हाट डू यू सिंग। आप क्या सोचते हैं, व्हाट डू यू थिंक। तो ये जब हम जानना चाहते हैं तो मैंने जो है मोहम्मद और एक स्टूडेंट थी, उनके साथ मैंने प्रैक्टिस कराई थी सिंपल सेंस में कि प्रेजेंट सिंपल में व्हाट आया था, फिर पास्ट सिंपल में हमने यूज किया था, फिर हमने फ्यूचर सिंपल में यूज किया था। तो आज का जो लेसन है वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है और मैं यही कहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अच्छा, दबा लिया आपने, दैट्स गुड थिंग। और ताकि आप तक मेरी लेटेस्ट वीडियो पहुंचती रहे। गेटिंग इट? तो आज जो है कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रोग्रेसिव टेंसेस में व्हाट जो है वो एक्टिविटी हमने रखी है कि आप जो है अपने आप से ये क्वेश्चंस करें और बने, और अपने भाइयों से, अपने जो पेरेंट्स देख रहे हैं तो मैं वही उनसे कहता हूं कि आप ये एक्टिविटी अपने बच्चों के साथ करें। और मैं सादा वर्ब रखता हूं, हाई फाई वर्ब रखने का कोई फायदा नहीं है। वो तो एक मैं वोकैबुलरी सेशन रखूंगा तो उसमें जो है वीडियोस बनाऊंगा, तो उसमें मैं आपको वोकैबुलरी, इडियम्स और प्रोवर्ब्स, फ्रेजल वर्ड्स वगैरह जो है वो आपसे जरूर मैं शेयर करूंगा। तो मैं यही कहता हूं कि आप प्रैक्टिस करें, आप खुद वॉच करें, फिर उसको अपने छोटे भाई बहन के साथ देखें, अपने बच्चों के साथ देखें। कोई शर्म की बात नहीं है, आपने भी उनका टीचर बन के खड़ा होना है। दैट्स गुड थिंग, अंडरस्टैंड। तो व्हाट आर यू लर्निंग, आप क्या सीख रहे हैं, तो आप जवाब दें आई एम लर्निंग। अब जो सीख रहे हैं आप कह सकते हैं व्हाट वर यू लर्निंग, पास्ट में क्या सीख रहे थे। अगर वो ही सीख रहे थे तो कह दें व्हाट विल यू बी लर्निंग, आप क्या सीख रहे होगे। तो जो फ्यूचर में आप कर रहे होगे आप वो ही बता सकते हैं। दैट्स नाइस थिंग, अंडरस्टैंड। तो अब जो है आप जाइएगा नहीं, मैं मोहम्मद और फातिमा को बुला रहा हूं ताकि वो प्रैक्टिस करें और आप इस एक्सरसाइज से भरपूर फायदा उठा सकें। Hi, this is Mohammed. Hi, this is Fatma. Today we are going to practice of what. What are you plus verb plus ing and then verb. Now we are going to practice. What are you doing? I am doing my homework. What were you doing? I was doing my homework. What will you be doing? I will be doing my homework. What are you speaking? I am speaking English. What were you speaking? I was speaking English. What will you be speaking? I will be speaking English. What are you attending? I am attending questions. What were you attending? I was attending questions. What will you be attending? I will be attending questions. What were you attending? I was attending my homework. What are you completing? I am completing my homework. What were you completing? I was completing my homework. What will you be completing? I will be completing my homework. What are you completing? I am playing cricket. What were you playing? I was playing cricket. What will you be playing? I will be playing cricket. What are you operating? I am operating computer. What were you operating? I was operating computer. What will you be operating? I will be operating computer. What are you listening? I am listening songs. What were you listening? I was listening songs. What will you be listening? I will be listening songs. What are you fixing? I am fixing a car. What were you fixing?
I was fixing a car. What will you be fixing? I will be fixing a car. What are you selling? I'm selling food. What were you selling? I was selling food. What will you be selling? I will be selling food. What are you buying? I'm buying a car. What were you buying? I was buying a car. What will you be buying? I will be buying a car. What are you teaching? I'm teaching English. What were you teaching? I was teaching English. What will you be teaching? I will be teaching English. What are you drinking? I'm drinking water. What were you drinking? I was drinking water. What will you be drinking? I will be drinking water. What are you watching? I'm watching cartoons. What were you watching? I was watching cartoons. What will you be watching? I will be watching cartoons. What are you learning? I'm learning my lesson. What are you learning? I'm learning my lesson. What were you learning? I was learning my lesson. What will you be learning? I will be learning my lessons. What are you writing? I'm writing a letter. What were you writing? I was writing a letter. What will you be writing? I will be writing a letter.